इनकम टैक्स फाइल करने के बहुत सारे अच्छे रीजंस हैं. द फर्स्ट इज अगर आपको कोई लोन चाहिए होगा, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सो इट गेट्स मच ईजियर अगर आपके पास ITR डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है. सेकेंड इज ऑफ कोर्स यू विल बी अवॉइडिंग पेनल्टी. ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग ऑन ट्रैवलिंग इंटरनेशनली तो वीज़ा बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है. दीज आर द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट दे आस्क इन फॉर. Basic standard documents, your PAN card, your Aadhaar card. If you're a salary earner, which will your Form 16, Form 16A, Form 16B, Form 16C, right? Your TDS certificates, जहाँ आपके investments में if you have an FD or something, वहाँ जो भी TDS कटाने, that is required. Form 26AS, that is available on your income tax portal, right? अगर आपको कोई भी rental income आ रही है तो उसका proof. अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं अपने सैलरी के कंपोनेंट में से तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड शो करना पड़ता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कोई डोनेशन करा है, आप इसके लिए कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, राइट? सो इन दैट केस वो जो ETG सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए स्पेसिफिकली दैट यू हैव टू हैव. There are two regimes out of which you can choose. ठीक है, एक old regime है और एक new regime. मैं तो old regime के slabs go as follows. Up to 2.5 lakhs you don't have to pay anything. 2.5 to 5 lakhs 5%. 5 to 10 lakhs 20%. Above 10 lakhs if you have an income, right, you're going to be paying straight 30% tax on whatever you have earned. For the new regime, it is a slightly different calculation. Up to 3 lakhs, you won't have to pay anything. 3 lakhs to 6 lakh, 5%. 6 lakh to 9 lakh, 10%. 9 lakh to 12 lakh, 15%. 12 to 15, 20%. और अगर आपकी income 15 lakh से ऊपर है, तो you will have to pay straight forward a tax of 30%. Thank you everyone for watching this video. If you like this kind of content we post regularly, you can check out our channel. Also, don't forget to subscribe, like and share this video.